हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार, जिसका टॉपिक नंबर्स हम डिस्कस कर रहे थे। आज इसकी सेकेंड यूनिट फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 2C हम सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के पहले की एक्सरसाइजेस 2A एंड 2B के सोल्यूशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता दिए हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस देखना है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बाकी की एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन भी आसानी से मिल जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ माइक्रोवेव ओवन इज ₹12,600. Rajesh paid 2/3 of the price in the cash and the rest in 12 equal monthly installments. Find the amount of monthly installment. तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ माइक्रोवेव ओवन इज इक्वल टू ₹12,600. Now the price paid in cash, that is 2/3 of the price जो उसने कैश में पे किया था. So 2/3 of ₹12,600. So इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 2/3 multiplied by ₹12,600. So 3 4s are 12, 3 2s are. On solving this, we'll get this as 8,400. Next is remaining amount, जो कि उसने इंस्टॉलमेंट में पे किया है। तो पहले हम रिमेनिंग अमाउंट निकाल देंगे। टोटल अमाउंट दैट इज 12,600 में से कैश अमाउंट पेमेंट हम माइनस कर देंगे 8,400. सो वील गेट दिस एज ₹4,200. Next, we need to see here there are 12 month installment. So number of installment paid is equal to 12. Now we need to find the amount of 1 month. वो उसने एक month में कितना installment पे किया है. So therefore amount of each installment is equal to, जो हमारे पास अमाउंट बचा है दैट इज 4,200 डिवाइडेड बाय 12. सो वील गेट हियर एज ₹350 फॉर द 12 month. सो हर महीने वो ₹350 पे करेगा. सेकेंड क्वेश्चन इज आफ्ताब्स मंथली सैलरी इज ₹25,000. ही स्पेंड्स 1/5 of his salary on rent. Of the remaining amount, he spends 1/4 on the education of his children and 1/5 of food. Find Aftab monthly expenditure and his monthly saving. तो सबसे पहले हमारे पास आफ्ताब की सैलरी पता है. सो वील राइट आफ्ताब्स मंथली सैलरी दैट इज ₹25,000 and amount paid on rent is 1/5 of ₹25,000. So in all we'll get 1/5 multiplied by ₹25,000. So we'll get here ₹5,000. Next is the remaining salary. That is rupees, जो उसकी टोटल सैलरी थी 25,000 में से हम ये ₹5,000 माइनस कर देंगे. सो वील गेट दिस एज ₹20,000. So now this ₹20,000 is being spent on education and food. So amount spent on education is 1/4 of
20,000. So 1 by 4 multiplied by 20,000. So we'll have this as rupees 5,000, and amount spent on food will be 1/5 of rupees 20,000. So we'll write this as 1/5 multiplied by 20,000. So we'll get this as rupees 4,000. Now we need to find the monthly expenditure. So total expenditure is equal to rupees 5,000 for the rent, 5,000 on the education, and 4,000 on food. So in total we have rupees 14,000 as the expense. Now we need to find the monthly saving. So monthly savings is equal to rupees 25,000 में से हम माइनस कर देंगे rupees 14,000. So we'll get here rupees 11,000 as the answer. Next question number 3. A piece of wire 3 by 4 meter long was cut into 3 pieces. The first piece was 3/20 meter long, while length of the second piece was 5/3 of the first. How long was the third piece? तो सबसे पहले हमको वायर की जो लेंथ दी गई है हम वो लिख लेंगे. लेंथ ऑफ piece of wire, that is 3/4 मीटर जो हमको गिवन है. नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, that is given 3/20 meter. Next is the length of second piece is 5/3 of the first piece. So 5/3 of first piece की length है 3/20. So 3/20 meter. So we can find it as 5/3 multiplied by 3/20. So 5 4s are, so we'll have this as 1/4 meter. Next is length of third piece will be equal to, जो इसकी टोटल लेंथ है 3/4, इसमें से हम माइनस कर देंगे 3/20 प्लस 1/4. So now first of all we'll take LCM inside. We'll have 20 as the LCM, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 plus 5. So 3/4 minus 8/20. Again taking LCM 20, 5 में चला जाएगा 15 minus 8. So we'll have this as 7/20 meter as the answer. Next is a fourth question. John got a prize of rupees 75,000 in a TV contest. He paid 1/10 of the prize as the income tax. Out of the remaining, he gave 1/3 to his son, 1/5 to his daughter, 1/10 to the Red Cross Society, and the rest to his wife. What portion of the prize did John's wife get and how much? So for solving this, सबसे पहले हमको जो given है पहले हम वो लिख लेते हैं. Amount of prize, that is rupees 75,000. Now next is the amount paid as income tax, that is 1/10 of rupees 75,000. So we'll get this as 1/10 multiplied by 75,000. एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, so it will be 7,500. अब है हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट.
रिमेनिंग अमाउंट हम निकालेंगे टोटल अमाउंट दैट इज 75,000 में से हम माइनस कर देंगे द इनकम टैक्स that is 7,500, so we'll get here as 67,500 as the answer. Next is amount given to his son, that will be 1/3 of rupees 67500. So we'll get this as rupees 22500. Next is amount given to his daughter, that is 1/5 of rupees 67500. So we'll get here as rupees 13500. अब उसने रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया है, सो अमाउंट paid to Red Cross Society. So that will be 1/10 of rupees 67500 will be rupees 6750. Therefore, rest of amount with him will be 67500 में से हम माइनस कर देंगे जो भी इसने जितना भी शेयर सबको दिया है, दैट इज रुपीज़ 22,500 प्लस रुपीज़ 13,500 प्लस रुपीज़ 6,750. So on calculation we'll get this as 67500 minus rupees 42750. In all we'll get this as 24750. Therefore amount paid to his wife is equal to rupees 24750. तो इतना उसने अपनी वाइफ को दिया है. नाउ पोर्शन of total income will be equal to 24750 को हम डिवाइड कर देंगे 75,000 के साथ. सो इट इज़ 33/100 as the answer. Next, question number 5. A shopkeeper has a stock of 140 kgs of wheat. In the first 4 weeks, he sell 20 1/2 kg, 25 3/4 kg, 26 1/2 kg and 47 1/4 kg of wheat respectively. How much wheat and what portion of the stock does he sell? So सबसे पहले उसके पास total stock of wheat जो कि है 140 kg. Next is the wheat sold during first 4 weeks is 21/2 plus 25 3/4 plus 26 1/2 plus 47 1/4. इन सबको हम ऐड करके सॉल्व कर देंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्विंग दिस वील गेट 41/2 प्लस 103/4 प्लस 53/2 प्लस 189/4. Now again taking LCM, so we'll have 82 plus 103 plus 106 plus 189. In all it will be 480/4 which is 120 kg. Therefore portion of stock he sold can be written as 120 divided by the total stock, that is 140.
So we'll get this as 6 upon 7 as the answer. Next is question number 6. Rajesh had a packet of 20 sketch pens. He gave 12 to Krishna, 6 to Meena. What fraction of packet did he give to Krishna and Meena? What fraction of packet was left with him? तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्केच पेन्स लिख लेते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ sketch pens is 20. Next is number of pens given to Krishna, that is 12. Next is number of pens given to Meena is 6. Next, number of pens left with him will be 20 में से उसने जितने दे दिए हैं. सो 20 माइनस 18 इज 2. अब हमको निकालना है पोर्शन ऑफ पेन गिवन टू कृष्णा. सो पोर्शन ऑफ पेन गिवन टू Krishna, that will be 12 upon 20. So we can write this as 3 by 5. Next is portion of pen given to Meena, that is 6 upon 20. So we can write this as 3 upon 10. Next, portion of pen left with Rajesh will be 2 by 20, which is 1 by 10 is the answer. Next question number 7. Ajit and Kunal paid 5 by 7 and 2 by 7 of the total cost of the book of comics. If the book costs rupees 84, how much did each of them pay? So total cost of the book is 84. So we'll write here total cost of book is rupees 84. Ajit paid for the book will be 5 upon 7 of rupees 84. So 5 upon 7 multiplied by 84. So 7 ones are and 7 twos are, so that is rupees 60. Next is Kunal paid for the book is 2 upon 7 of rupees 84. So 2 upon 7 multiplied by 84. So 7 ones are, 7 twos are, it is rupees 24. Hence this is the answer. Next question number 8. Rajesh bought 1 by 4 kg of grapes, 2 1 by 2 kg of mangoes, 1 by 2 kg of apples and 2 kg of oranges. How much fruits in total did he buy? तो यहाँ पर आपको ये बताना है कितने उसने टोटल फ्रूट्स खरीदे. तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं. ग्रेप्स जो उसने बाय किए दैट इज़ 1 by 4 kg. मैंगोज़ जो उसने बाय किए 1 by 2 kg. एप्पल्स जो उसने बाय किए 1 by 2 kg. एंड ऑरेंजेस जो उसने बाय किए हैं 2 kgs. सो टोटल fruits bought will be 1 by 4 plus 1 by 2 plus 1 by 2 plus 2. So in all we'll convert this into simple fraction. 5 by 4 plus 5 by 2 plus 3 by 2 plus 2. Taking LCM, we'll take LCM as 4 और यहाँ पर 1 हो जाएगा. So we'll get here 5, 10, 6 plus 8.
सो टोटल विल बी 29/4. तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे एज 7 1/4 kgs. Next question is question number 9. A book has 360 pages. Ajay reads 11/18 of the book in a week, while Seema reads 7/10 of the book in a week. Who read faster and by what fraction and by how many pages? तो सबसे पहले total number of pages हमको given है. Total number of pages is 360. Next is number of pages read by Ajay. So it is 11/18 of 360 pages. So 11/18 multiplied by 360. So 18 में ये 20 times. So 220 pages अजय ने read किए. Next is number of pages read by Seema. So it is 7/10 of 360. So 7/10 multiplied by 360. ये 0 से 0 cancel. So we'll get here 252 pages. So now we can see here 252 ज़्यादा है 220 से, तो Seema is reading faster. So we can write here, so Seema read faster by, we'll find the difference, that is 252 minus 220, that is 32 pages वो ज़्यादा पढ़ चुकी है. अब हमको ये भी बताना है फ्रैक्शन में. सो फ्रैक्शन ऑफ पेजेस विल बी 32 divided by 360. So we'll have 4/45 as the answer. Last question number 10. Lalit weighs 66 kg. Gauri's weight is 4/3 of Lalit's weight. Find Gauri's weight and the difference between their weights. So सबसे पहले हम लिखेंगे weight of Lalit, that is given 66 kg. Gauri's weight will be 4/3 of 66 kg. So 4/3 multiplied by 66, 22 times cancel हो जाएगा. So it will be 88 kg. अब आपको कैलकुलेट करना है डिफरेंस इन देयर वेट्स, that is 88 kg minus 66 kg. So we'll get here 22 kg as the answer. आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियोस पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एट लास्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.